नमस्कार। मैं फ़ौज़िया अफ़ज़ाल। मैं इग्नू की CAVP की स्टूडेंट हूँ और आज हमारा जो सब्जेक्ट है बेसिक एलिमेंट ऑफ स्केच एंड ड्राइंग, उसके बारे में आज हम जानना चाहेंगे अपने एक्सपर्ट से, डॉक्टर लक्ष्मण प्रसाद जी, जो स्कूल ऑफ परफॉर्मिंग एंड विजुअल आर्ट इग्नू के असिस्टेंट प्रोफेसर हैं। नमस्कार सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है। आभार आपका कि आप हमसे जुड़े। आज हम आपसे कुछ क्वेश्चंस पूछना चाहेंगे अपने जो बेसिक एलिमेंट्स होते हैं स्केच और ड्राइंग के। धन्यवाद फौजिया जी। तो आज का जो आपने सब्जेक्ट का चयन किया है, बेसिक एलिमेंट्स ऑफ ड्राइंग एंड पेंटिंग, ये बहुत ही आधारभूत एक विषय वस्तु है। जो एक बिगनर होता है फाइन आर्ट्स का, विजुअल आर्ट का, उसको इन एलिमेंट्स के बारे में जानने की बहुत ही ज़रूरत होती है, ताकि वो अपने कला कौशल को विकसित कर पाए, विषयगत ज्ञान कर पाए और अंतर स्पष्ट कर पाए कि स्केचिंग क्या होता है और ड्राइंग क्या होता है। तो मैं विस्तार से इस विषय पे बात करना चाहूँगा एक प्रेजेंटेशन के माध्यम से। तो सबसे पहले मैं स्केचिंग और ड्राइंग में अंतर क्या होता है। कभी कभी जो विद्यार्थी होते हैं, जो बिगनर होते हैं स्टूडेंट, और जो जनमानस होता है, वो स्केचिंग को ड्राइंग बोल देते हैं और ड्राइंग को स्केचिंग बोल देते हैं। तो इन दोनों शब्दों का जो अंतर है उस पे मैं बात करना चाहूँगा। और जो हमारे सर्टिफिकेट इन विजुअल आर्ट, पेंटिंग या अप्लाइड आर्ट के विद्यार्थी आज के इस सत्र को देख रहे होंगे, तो उनको भी एक मदद मिलेगी। तो मैं बात करता हूँ स्केचिंग के बारे में कि स्केचिंग क्या होता है। किसी वस्तु के बाह्य रूप को कम समय में कम रेखाओं में अंकित कर देना ही स्केचिंग कहलाता है। ऐसे कह लीजिए कि कोई भी ऑब्जेक्ट है, ह्यूमन फिगर है, नेचर है, उसको क्विक शॉर्ट लाइंस में, शॉर्ट टाइम में ड्रॉ कर देना ही स्केचिंग होता है। तो स्केचिंग में रेखाओं की महत्ता होती है, मतलब प्रधानता होती है, कम रेखाओं की प्रधानता होती है। अब इसके ही आगे की बात हम करें तो कुछ इमेज के माध्यम से मैं आप लोगों को बताना चाहूँगा कि आप देख पाएंगे कि स्केचिंग होता क्या है। जैसे आप देख पा रहे होंगे अभी कि मैंने कुछ ऑब्जेक्ट को स्केच मोड में ड्रॉ किया हुआ है। एक बॉटल है, प्लेट्स है, बाउल है, लीफ है। तो इस इमेज के माध्यम से भी स्केचिंग को आप समझ पा रहे हैं। तो इसके बाद दूसरे इमेज के माध्यम से बताना चाहूँगा। आप यहाँ भी देखें, दो ऑब्जेक्ट रखा हुआ है। अब यहाँ पे आप देखेंगे कि रेखाओं की जो गति है, रेखाओं का जो बोल्डनेस है, उसमें कुछ रेखाएं त्वरित हैं, कुछ रेखाएं थोड़ी सी स्लो हैं, कुछ एक टोनल लाइन है। अब नेक्स्ट लाइन में भी आप देख पाएंगे कि इसको हमने एक स्केच पेन होता है या मार्कर, ब्लैक मार्कर आप ले लीजिए, उससे भी आप ऑब्जेक्ट को ड्रॉ कर सकते हैं। इसमें थोड़ी सी रेखाओं की मात्रा ज़्यादा हो गई है, लेकिन ये भी स्केच के कैटेगरी में ही आएगा। और स्केच को हम तब समझ पाएंगे जब हम ड्राइंग को डिफाइन करेंगे। अब कुछ स्केच आप ऐसे भी देख सकते हैं, कुछ घर। अब मैं सारे जो विद्यार्थी हैं उनको बताना चाहूँगा कि आप जहाँ भी बैठे होते हैं वहाँ के इन्वायरमेंट को ऑब्जेक्ट के माध्यम से आप कैच कर पाते हैं। जैसे आप इंडोर में हैं, किचन में हैं, अपने स्टडी टेबल पे हैं, बेडरूम में हैं, तो उस स्केच के माध्यम से पता चल जाएगा कि आप कहाँ बैठकर उसको आपने स्केच किया हुआ है। सू का आप देख सकते हैं। इसके बाद नेचर में भी जाएं तो आप उसकी गति को पकड़ सकते हैं। जैसे कि आप देख पा रहे हैं, ताड़ के पेड़ को मैंने दिखाया हुआ है और जी। रिदमिकल लाइंस का इस्तेमाल किया हुआ है। अब स्केच को आपने थोड़े से मेरे बात के माध्यम से, डिफाइन के माध्यम से आप लोग समझ गए होंगे। तो इसी के क्रम में ड्राइंग को भी मैं बताना चाहूँगा कि ड्राइंग क्या होता है। आपको मैंने बताया
कम टाइम में, कम रेखाओं में किसी वस्तु को अंकित कर देना ही स्केचिंग कहलाता है। अब स्केचिंग में ही जब हम छाया प्रकाश, लाइट एंड शेड का प्रयोग करते हैं, समावेश करते हैं, इस्तेमाल करते हैं उसके वॉल्यूम को पकड़ने के लिए, तो वहाँ पे क्या होता है, वो ड्राइंग कहलाती है। मतलब ये कह लीजिए कि वहाँ पे लाइट एंड शेड है और शेडिंग है, तो शेडिंग के माध्यम से ही वॉल्यूम आएगा, नहीं तो वो फ्लैट लगेगा। उस फ्लैटनेस को समाप्त करने के लिए ही हम शेडिंग का इस्तेमाल करते हैं। तो शायद हमारे जो लर्नर्स हैं समझ गए होंगे कि स्केचिंग से हम कैसे ड्राइंग की तरफ बढ़ते हैं। हमने क्या किया कि स्केचिंग जो लाइन ड्राइंग थी उसमें शेडिंग का इस्तेमाल कर दिया। आप स्लाइड में देख भी पा रहे हो कि एक मैंने पॉट रखा हुआ है, उस पॉट में आप देखें, लेफ्ट साइड से देखें तो पॉट है, वाटर पॉट है, उसको सेकेंड इमेज में आप देखेंगे स्केच है, और थर्ड इमेज के माध्यम से ड्राइंग को मैंने डिफाइन किया हुआ। आप एक ही ऑब्जेक्ट को, स्केच को भी देख पा रहे हैं और ड्राइंग को भी देख पा रहे हैं। अब इसके इस क्रम में ग्रुप ऑब्जेक्ट को भी हमने एक स्टिल लाइफ के माध्यम से दिखाने का मैं प्रयास कर रहा हूँ कि तीन ऑब्जेक्ट को कैसे क्रमवार तरीके से रखा गया है, और तीनों ऑब्जेक्ट के टोन अलग हैं। मैं टोन के बारे में आप लोगों को इसके आगे बताऊंगा, तब तक आप इसको समझें कि इसमें तीन ऑब्जेक्ट को हम क्रमवार तरीके से रखा हुआ है, और इसमें टोन आप देख सकते हैं और डायमेंशन भी अच्छे से आप देख सकते हैं। नेक्स्ट स्लाइड से के माध्यम से मैं दिखाना चाहूँगा। यहाँ भी ग्रुप ऑब्जेक्ट स्टडी है, इसको रखने का तरीका, इसमें शेडिंग करने का तरीका अलग है। मिक्स शेडिंग किया गया है, कहीं पे क्रॉस शेडिंग है, कहीं पे 45 एंगल पे है, कहीं पे स्मगिंग है, तो मैक्सिमम तरीके का शेडिंग इसमें पैटर्न को इस्तेमाल किया गया हुआ है। आप क्लॉथ देख सकते हैं, ट्रांसपेरेंट है, ऑब्जेक्ट है, बहुत सारी वस्तुओं को हमने बनाया हुआ है। इसके नेक्स्ट में हम देख पाएंगे कि दो ऑब्जेक्ट को स्लाइड के माध्यम से हमने दिखाया हुआ है। लेफ्ट स्लाइड में मैंने अपने विद्यार्थियों को बताना चाहूँगा कि जो बिगनर हैं उनको तीन टोन का नॉलेज शुरू में होना चाहिए, लाइट, मिडिल टोन और डार्क टोन। आप इमेज के माध्यम से देख सकते हैं कि बॉटल में मैंने डिवाइड किया हुआ है टोन को कि लाइट टोन कहाँ है, मिडिल टोन कहाँ है और डार्क टोन कहाँ है। तो इन टोन के माध्यम से ही क्या होता है, किसी वस्तु में डायमेंशन आता है। और दूसरे राइट साइड के स्लाइड में आप देख पाएंगे कि हमने एक आउटडोर जो मनी मतलब प्लांट है, पॉट है, प्लांट का पॉट है, डिफरेंट टाइप के उसमें प्लांट्स को मैंने ड्रॉ करने का प्रयास किया हुआ, और विशेष तरीके से यहाँ के पॉट की बनावट को आप देखें और डायमेंशन को आप देखें, टोन को समझें। नेक्स्ट स्लाइड में बात करेंगे कि आखिर में स्केचिंग और ड्राइंग के बेसिक एलिमेंट्स क्या होते हैं। तो मैं आपसे फौजिया जी एक पूछना चाहूँगा कि कुछ विद्यार्थियों के प्रश्न आए थे, तो एक जी प्रश्न आप पूछ सकती हैं इससे रिलेटेड। जी सर, एक क्वेश्चन आया है, कुछ बनाते वक्त पेंसिल को जी किस तरह से पकड़ें, जी उसकी क्या स्टाइल होना चाहिए पकड़ने जी का? जी ये बहुत ही बेसिक प्रश्न है और बहुत अच्छा प्रश्न है। हर एक लर्नर की बात कर लें, एक कला साधक की बात कर लें, पेंसिल को या पेन को पकड़ने का उनका एक अलग एक मुद्रा होता है। कुछ विद्यार्थी या कुछ आम जन हैं जो कला साधक, उनके पकड़ने का तरीका है ये जन्मजात होता है। हम्म हम्म कुछ लोग बीच से पकड़ते हैं, कुछ उससे एकदम लास्ट के थोड़े से ऊपर के भाग को पकड़ते हैं। जी लेकिन जब हम प्रैक्टिस के सरफेस को देखते हैं, हम्म कह लीजिए कि जब मिनिएचर पेंटिंग हमें बनानी हो, उसकी साइज 6x6 इंच में हो, तो क्या हम अपने ब्रश को ऐसे पकड़ेंगे? नहीं, क्योंकि वो उसका आकार बहुत छोटा है। तो ब्रश पकड़ने का मुद्रा जो होना चाहिए बहुत ही आगे हमारे फिंगर्स को पकड़ने का होना चाहिए कि हम ब्रश को या पेंसिल को आगे अग्रभाग से पकड़ें। पकड़े। और जब बड़े सरफेस की हम बात करते हैं, कैनवस है, बिगर साइज की कैनवस है,
6x6 है, 6x8, 10 फीट की है, तो वहाँ ब्रश पकड़ने का, पेंसिल पकड़ने की मुद्रा ए होती है, ताकि जो लाइन आप खींचेंगे तो आपको लाइन वो दिखेगा। यदि हम यहाँ पकड़ लेंगे तो हमें वो लाइन नहीं दिखेगा। और फ्री होकर लाइन खींचने के लिए हमें ब्रश का पकड़ने का मुद्रा ए होनी चाहिए। तो आइए बात करते हैं इसके आगे कि बेसिक एलिमेंट्स होता क्या है ड्राइंग एंड स्केचिंग में। तो बेसिक एलिमेंट्स लाइन है, टोन है, टेक्सचर है, और टान है, और फॉर्म्स है। तो चार तरह के मेन आपको एलिमेंट्स माने गए हैं ड्राइंग और स्केचिंग के लिए: लाइन, फॉर्म, टोन, टेक्सचर। तो आइए क्रमवार तरीके से एक एक पे हम प्रकाश डालते हैं कि आखिर में लाइन क्या होती है। थोड़ा सा मैं परिचय देना चाहूँगा। वास्तव में जो चित्र या कुछ भी आकृति आप देखते हैं उसमें मूलतः 6 एलिमेंट्स होते हैं, लेकिन स्केचिंग ड्राइंग में 2 एलिमेंट्स हट जाते हैं। वो एलिमेंट्स क्या है? कलर और स्पेस। मुख्यतः मैंने 4 एलिमेंट्स को यहाँ दिखाया हुआ है जिसकी प्रधानता होती है। इसको सिखाने का यही उद्देश्य है कि जो भी एक लर्नर है, कोई भी आकृति बनाता है, तो इन चारों एलिमेंट्स का नॉलेज उसको होना होना चाहिए, चाहिए। तभी वो अच्छे से प्रैक्टिस कर पाएगा और अच्छे से कला साधना कर पाएगा। अब लाइन की बात कर लेते हैं। जैसा कि हम अपने विद्यार्थी जीवन में जब हम छठी या सातवीं में भी पढ़ते हैं तो मैथ के जब क्लास होते हैं तो लाइन को भी हमारे क्लास टीचर हैं, मतलब सब्जेक्ट के जो टीचर रहे होंगे, तो उन्होंने बताया होगा कि दो बिंदुओं को यदि जोड़ दिया जाए तो वहाँ लाइन क्रिएट हो जाती है, मतलब रेखा का निर्माण हो हो जाता जाता है। है। आपने भी पढ़ा होगा, हमारे जो दर्शक होंगे उनको भी पता होगा। और एक तरीका और है कि बिंदुओं के चलने से, हम्म। पॉइंट पॉइंट बना देने से, यदि सारे पॉइंट्स को एक साथ मिला भी देते हैं तो वहाँ रेखाओं का निर्माण हो जाता है। तो दो चीज़ें आ गई। एक तो है कि दो पॉइंट को यदि हम मिला देते हैं तो वहाँ भी लाइन क्रिएट हो जा रहा है, और जहाँ बिंदुओं के चलने से हम सारे बिंदुओं को एक साथ मिला देते हैं वहाँ भी लाइन क्रिएट हो जाती है। अब इसके आगे का हम स्लाइड देखें कि लाइन कितने तरह के होते हैं, मतलब रेखाओं के कितने प्रकार होते हैं। वर्टिकल लाइन, हॉरिजॉन्टल लाइन, एंगुलर लाइन, डायगोनल लाइन, स्पाइरल लाइंस। मतलब सीधी लाइन जैसे कह लें। वर्टिकल लाइन को हम सीधी लाइन कहते हैं, जी। पड़ी हुई लाइन को क्षैतिज रेखा कहते हैं। कोणीय लाइन हो जाता है। करवट, मतलब डांस मुद्रा में आप करवट लाइन को देखते हैं। चक्राकार लाइन, जहाँ गति होती है वहाँ चक्राकार रेखाओं का दर्शन होता है। आप स्लाइड में देख पा रहे होंगे कि हमने डिफरेंट तरह के रेखाओं का इस्तेमाल किया हुआ है, वहाँ डिफाइन भी किया हुआ है। कुछ टोन के माध्यम से किया हुआ है, कुछ लाइन के माध्यम से किया हुआ है। अब रेखाओं को खींचने के माध्यम क्या हो सकते हैं? पेंसिल हो सकता है, पेन हो सकता है, मार्कर हो सकता है, तूलिका हो सकती है, कोयला मतलब चारकोल जिसको बोलते हैं, या कोई कठोर हार्ड नुकीली वस्तु कोई हो, उससे भी हम रेखा का निर्माण कर सकते हैं। जी। यहाँ कठोर नुकीली वस्तु जैसे है कि वॉल है कोई, हम्म। उसको खरोच देना, हम्म। खरोचने के बाद जो अक्स इम्प्रेशन वहाँ बनता है वो भी एक लाइन का ही काम करता है। तो ये माध्यम हो गए। उसके बाद हम देख सकते हैं कि रेखाओं को खींचने का आधार तल क्या होना चाहिए। आधार तल है पेपर हो सकता है, कैनवास हो सकता है, कोई दीवार हो सकता है, प्लास्टिक कोई भी एक सरफेस, वुडन सरफेस हो सकता है, इत्यादि हो सकते हैं, उसके आधार तल हो सकते हैं। अब रेखाओं की जो प्रकृति है, मतलब उसका कैरेक्टर क्या होना चाहिए, रेखाओं में क्या एक दर्शक महसूस करता है और एक प्रैक्टिशनर को कैसी लाइन क्रिएट करनी करनी चाहिए। चाहिए। जैसे रिदमिकल लाइन हो, उसमें गति हो, मोशन हो, मतलब जो जिस इमोशन के लिए हम लाइन खींच रहे हैं उस इमोशन का वो दर्शन होना चाहिए। ये बेसिक चीज़ें हैं लाइन के लिए। माध्यम क्या हो गया, आधार तल क्या हो गया, उसके इम्प्रेशन क्या हो गया। अब दूसरा जो एलिमेंट है वो है रूप, फॉर्म जिसको बोलते हैं। तो हर वस्तु की अपनी एक पहचान होती है, उसका एक एरिया होता है,
जिससे वो पहचाना जाता है। जैसे हम जी। कह लेते हैं कि ये ग्लास है, ये मग है, ये बकेट है, ये मतलब जो भी चीज़ें हैं वो अपने स्पेशल कैरेक्टर से ही वो पहचानी जाती हैं, जो रूप को डिफाइन करती है। अब रूप में आप दो चीज़ें मुख्यतः आती हैं। वो सारे जो हमारे नेचर में रूप हैं उसमें आप देख सकते हैं, एक होता है सिमेट्रिकल और एक होता है नॉन सिमेट्रिकल। सिमेट्रिकल। एक होती है सममित और एक होती है असममित। सममित असममित को हम सीधा सा देख लेते हैं। जैसे ग्लास है, एक क्या है हमारा सिमेट्रिकल है, और यही एक हम हैंडल इसको पकड़ने के लिए लगा दें, मग कर लें, तो हमारा क्या होगा, नॉन सिमेट्रिकल हो जाएगा। तो नेचर में आप देख पाएंगे। और दूसरे स्लाइड में हमने देखा कि ह्यूमन फेस बनाया हुआ, ट्री बनाया हुआ, पॉट बनाया हुआ, तो उसमें वो फॉर्म्स को रिप्रेजेंट कर रहा हुआ। अब यहाँ टोन के माध्यम से बात करेंगे कि तीसरा जो एलिमेंट्स है तान है। तो रंगत के हल्के और गहरेपन को टोन कहते हैं, है ना। जी। हल्का रंग बोलते हैं ना, कि यदि एक ही कोई कलर है, कलर टोन की बात करते हैं। जैसे आज के फैशन की हम बात करते हैं, ड्रेस सेंस की बात करते हैं, हम कहीं कपड़े लेने जाने की बात करते हैं, तो बहुत से एक ही रंगत में डिफरेंट टाइप के टोन्स दिखते हैं। जी। आज तो इंटीरियर डेकोरेशन के लिए हम घर में अभी दीपावली बीता हुआ है, जी। घरों को सजाने के लिए लोग अपने इंटीरियर के को मल्टीपल टोन्स का सिलेक्शन किया होगा, कि वॉल का कलर ए है, हमारा ड्रेपरी ए होना चाहिए, और पेंटिंग इस टोन का होना चाहिए। तो टोन को हम ऐसे समझ सकते हैं। और स्लाइड में भी आपने देखा होगा कि गहरे से हल्के तान में मैंने इंप्रेशन को दिखाया हुआ है। और राइट साइड के स्लाइड में आप देख पा रहे होंगे कि हमने एक गति में कुछ लीनियर लाइन के माध्यम से टोन को दिखाने का प्रयास किया हुआ है। ऊपर की मतलब लाइट से डार्क की तरफ वो लाइन जा रही है, उसके नीचे जो एक टोन दिख रहा है डार्क से लाइट की तरफ होता है। जैसे आप म्यूजिक में सरगम की बात हम कर लें, स्वर की बात कर लें, सारे गम प ध नि सा जो है वो एक क्रम में जा रहा है, एक तान में जा रहा है। उसमें क्या है कि आरोही अवरोही, तो तान को हम ऐसे समझ सकते हैं। अब आता है पोत की हम बात करते हैं कि आखिर में टेक्सचर क्या होता है। जी। तो प्रकृति ने जितने भी जीव जंतुओं को या मानव आकृतियों को, पशु आकृतियों को बनाया, सबके क्या होते हैं, टेक्सचर्स अलग हैं। तो टेक्सचर को आप ऐसे समझ सकते हैं कि पत्थर के जो एक टेक्सचर है, मार्बल की हम बात कर लें, उसको हम देख लें, और एक प्लास्टिक के या एक शीशे की बात हम कर लें, तो सभी के सरफेस का कैरेक्टर जो होता है अलग होता है। उसी को हम क्या करते हैं, पोत कहते हैं या टेक्सचर कहते हैं, जो अपने विशेष गुण से पहचानी जाती जाती है। है। जैसे इमेज के माध्यम से भी मैं दिखाना चाहूँगा कि लेफ्ट साइड के डिफरेंट टाइप के हमने टेक्सचर को क्रिएट करने का प्रयास किया हुआ है। आप वो वेजिटेबल को हम देख लें, करेले के टेक्सचर को देख लें, और पोटैटो को देख लें, या टोमेटो को देख लें। जी। टोमेटो कितना चिकना है, और करेला का आप टेक्सचर देखें, खुरदुरा, उस खुरदुरा होता पर है। टेक्सचर है। तो उसकी एक पहचान है। तो जब हम स्टील लाइफ या ऑब्जेक्ट करें तो उसके कैरेक्टर को बनाने में हमारे रेखाओं की महत्ता होती है, और स्केच और ड्राइंग की महत्ता होती है। होती है। अब राइट साइड में भी आप देख सकते हैं स्लाइड में कि हमने एक करेले के ही टेक्सचर को, पोटैटो को टेक्सचर को दिखाया हुआ है। अब जो पोत है, जो टेक्सचर है, उसको कैसे क्रिएट किया जाए, और उसको क्रिएट करने में कौन से माध्यम इस्तेमाल में आते हैं। पेंसिल है, पेन है, मार्कर है, कोयला है, कपड़ा है, रंग अब कपड़ा यहाँ अलग हमारे दर्शकों को पता चल रहा होगा। तो आजकल आप जब इंटीरियर की बात करते हैं, दीवारों की बात करते, दीवार को पेंट करने की बात होता है, तो कपड़े से भी हम टेक्सचर क्रिएट करते हैं। टेक्सचर को क्या कहते हैं, कपड़े का पोटली बनाकर हम एक्रिलिक कलर या किसी कलर को लेके थपथपाते हैं, तो उससे डिफरेंट टाइप के टेक्सचर आते हैं। या नेचर में जो लीफ है या कुछ भी ऐसा कुछ है ऑब्जेक्ट, एक सरफेस को, उससे भी हम टेक्सचर क्रिएट करते हैं। तो पोटली में बना के भी हम थपथपाते हैं या इम्प्रेशन उसको लेते हैं, वही वो टेक्सचर का काम कहलाता है। तो डिफरेंट टाइप के टेक्सचर को यहाँ भी देख सकते हैं। मैंने एक सर्किल में क्रिएट किया है, 45 एंगल पे किया है, एक क्रॉस किया है, एक मिक्स किया है, जिगजैग किया हुआ लाइंस के माध्यम से हमने टेक्सचर को उत्पन्न किया हुआ है।
तो ये रहे आपके बेसिक जो एलिमेंट्स हैं, लाइन, टोन, टेक्सचर इत्यादि। तो उसकी प्रधानता होती ही होती है एक स्केचिंग और ड्राइंग में। तो मैं सारे अपने जितने भी सर्टिफिकेट प्रोग्राम के विद्यार्थी हैं या आम जन इस प्रोग्राम को देख रहे हैं, तो इन चारों अंगों को साधने की ज़रूरत होती है और बहुत ही मुख्य भूमिका इसकी होती है, जिसके बिना हम एक अच्छा स्किल डेवलप नहीं कर पाते हैं। अपने कला कौशल को विकसित करने के लिए हमें इनकी प्रैक्टिस करने की ज़रूरत होती पड़ती है। है। बिल्कुल। और फौजिया जी, बहुत से क्वेश्चंस आए होंगे हमारे विद्यार्थियों के तरफ से, जी तो आपसे मैं आग्रह करूंगा कि आप उन क्वेश्चन को उनके माध्यम से आप प्रस्तुत करें। सर, एक प्रश्न आया है, शेडिंग एंड लाइन जी का आपस में कितना महत्व है, कितना तालमेल होता है इनमें? जी जी जी। लाइन ही मुख्य रूप से उसकी भूमिका होती है। हम्म। यदि लाइन नहीं है तो हम्म। हम शेडिंग हम कर ही नहीं पाएंगे। जी। शेडिंग को करने में रेखाओं की एक अग्री मतलब मुख्य भूमिका होती है और प्रधानता होती है। जैसे कि मैंने बहुत से टोन जब मैंने दिखाया स्लाइड में, तो आप 45 एंगल पे शेडिंग कर रहे हो या क्रॉस शेडिंग कर रहे हो, मतलब जो भी है, एक डायमेंशन क्रिएट करने के लिए हमें रेखाओं की मदद लेनी ही पड़ती है। जी। और यदि जहाँ पे रेखाएं नहीं हैं, आप कह लीजिए कि रेखा और शेडिंग जो है एक दूसरे के पूरक हैं। शेडिंग के माध्यम से हम छाया प्रकाश उत्पन्न करते हैं। यदि शेडिंग ही शेडिंग दिया हुआ है तो धुंध सा दिखेगा जैसे कि बादल, और जैसे कि कोई लाइन खींचेंगे तो वहां डायमेंशन भी नहीं आएगा। बिल्कुल। तो उस शेडिंग को हमें एक चीजों में बांधना, एक रूप में बांधना है, तो वहां रेखाओं की भूमिका होगी ही होगी। उन रेखाओं के माध्यम से उस शेडिंग को हम कंट्रोल करेंगे। कर सकते हैं, बिल्कुल बिल्कुल। सर, एक क्वेश्चन है, मानव आकृति के साथ में 3D वस्तुओं का हम्म। उपयोग हम कैसे कर सकते हैं? ये बहुत ही अच्छा प्रश्न है। जब ह्यूमन फिगर की बात कर रहे हैं और ऑब्जेक्ट की बात कर रहे हैं, हम्म। क्योंकि वो भी एक दूसरे के पूरक ही हैं। बिल्कुल। जैसे एक अच्छा सा एग्जांपल मैं दूं, यदि मैं आप किचन में कोई ह्यूमन फिगर खड़ा हुआ है, हम्म। तो किचन में तो हम ऑफिस के ऑब्जेक्ट को नहीं बनाएंगे या दिखाएंगे। बिल्कुल नहीं। ऑफिस के ऑब्जेक्ट जैसे होता है, टेबल होता है, चेयर होता है, कंप्यूटर होता है, लैपटॉप इत्यादि होते हैं। तो क्या हम इन ऑब्जेक्ट को किचन में दिखाएंगे? नहीं नहीं दिखाएंगे। दिखाएंगे। और किचन के ऑब्जेक्ट को ऑफिस में हम नहीं दिखाएंगे। हम्म। तो हमारे विद्यार्थियों को ये भी सीखने की जरूरत होती है कि जहाँ पे हम स्केचिंग करते हैं ह्यूमन फिगर के साथ, हम्म। वहाँ के ऑब्जेक्ट को जरूर ड्रॉ करें, ताकि आपको जब कंपोजिशन बनाने की जरूरत पड़ती है, पोस्टर बनाने की जरूरत पड़ती है, तो उन ऑब्जेक्टों की सहारा आप ले लेंगे। सकते हैं। तो बहुत ही एक दूसरे के पूरक हैं। या आपको वो सब्जेक्ट पता होना चाहिए। जी 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 जी। कि हमें मिला डेली लाइफ मार्केट का सब्जेक्ट और हम्म। हम बना रहे इंडोर के सब्जेक्ट, जी। तो विषय के साथ हमें ऑब्जेक्ट का चयन करना करना ही चाहिए। करना है। जी जी। सर, हम जो मानव का जो चेहरा है जी। उसको हम कैसे आकर्षित कर सकते हैं, कैसे अट्रैक्टिव कर सकते हैं? अब ह्यूमन फेस जो है हम्म। उसमें एक्सप्रेशन की, एक्सप्रेशंस की हाँ, बात है। अब उस एक्सप्रेशन में हमें उसको स्केचिंग मूड में करना है हम्म। या डायमेंशनल मोड में करना है। जी। यदि स्केचिंग मोड में करना है तो वहाँ पे रेखाओं की जो गुणता है, हम्म। जो क्वालिटी है, उसको हमें ध्यान देना पड़ेगा कि उसके एक्सप्रेशन क्या हैं। आप लोगों ने थ्योरी में रसा भी पढ़ा होगा, थोड़ा सा षडंग पढ़ा होगा। जी। OVA 3 का जो है हमारा षडंग है, उसमें 6 लिम्स ऑफ पेंटिंग है। रूप भेदा प्रमाणानि भाव लावण्य योजनम सादृश्य वर्णिका भंग इति चित्र षडंगकम। जो भावा है, तो भावा में वही उसी की बात कही गई है। जब आप थिएटर की बात करती हैं, थिएटर देखने जाती हैं, तो फेस एक्सप्रेशन देखते हैं आप पे।
वहाँ पे एक रौद्र है और एक हास्य है। रौद्र में एक्सप्रेशन आँखों का क्या है, नोज का क्या, लिप्स क्या क्या है। वहीं हास्य में आँखों का एक्सप्रेशन क्या है। और यदि एक्सप्रेशन को सीखना है हमें, तो डांस कोई भी है, कथक है या भरतनाट्यम, कोई भी डांस फॉर्म देखिए आप, अभिनय जो कर रहा है, जो डांस है, नर्तकी है उसके एक्सप्रेशन को आप जरूर देखें, ताकि वहाँ से उस भाव को कैच कर पाएंगे और अपने सबकॉन्शियस माइंड में भी उसको सेव करते जाएं। और जैसे जितना भी हम प्रैक्टिस करेंगे वो सबकॉन्शियस माइंड में ऐसे भी सेव होते ही जाता है। तो हमें उसको प्रत्यक्ष देख के भी क्विक एक्सप्रेशन में, हमें स्केच में उसको कैरेक्टर को लाना है। अब उसके विस्तार को हमें देखना है, उसके डिटेल्स को देखना है। तो वहाँ पे हमें देखना है कि आँखों के डायमेंशन को हम कैसे लाएं, आँखों के डायमेंशन के लिए कितनी टोन की ज़रूरत है हमें। वहाँ पे हमारा टोन वर्क करेगा। हाँ, वहाँ टोन और लाइन लाइन्स और हाइलाइट्स। ओके। हाईलाइट मतलब चमक जो है उसका, उसका जो एक सेंटर में चमक है, तो उसको भी हमें देखना पड़ेगा। तो ओवरऑल हमें एक्सप्रेशन की जब बात करें, प्रश्न दोबारा पूछें ताकि मैं स्लिप कर रहा हूँ कि एक्सप्रेशन से रिलेटेड था प्रश्न। जी, मानव का जब हम चेहरा बनाएं तो जी उसको कैसे आकर्षित करें? हाँ, तो चेहरे में वो भाव का समावेश होना चाहिए और जो भाव है, इमोशंस है, उसकी प्रैक्टिस होने चाहिए। और ये जो भाव की बात है, हमें कला साधना पे ये प्रश्न पूरा का पूरा हमारे प्रैक्टिस पे आधारित है जी। कि कितनी मात्रा में हम प्रैक्टिस कर रहे हैं। तो मुझे पता है कि बहुत से विद्यार्थी ऐसे होंगे जो पहले से सीख रहे होंगे और कुछ ऐसे विद्यार्थी हैं जो अभी सीखना स्टार्ट ही किए हुए किया है, हैं, अभी उनको बिगिनर्स प्रैक्टिस है की वो। ज़रूरत है। जी। तो दूसरे प्रश्न पे आने से पहले मैं अभी छोटा सा ब्रेक लेना चाहूँगा फौजिया जी। जी। तो थोड़े से ब्रेक के बाद दोबारा से मिलते हैं। Do you wish to be part of a television studio like this or any other media system? Or already part of any media system, want to enhance a new set of skills? Welcome to School of Journalism New Media Studies. Here in the School of Journalism New Media Studies, we are offering program for all set of people to learn and enhance the media skills. The vision of School of Journalism and New Media Studies is to generate a new set of professionals in the area of media and communication studies with understanding about role of media in the national development and global understanding. We offer innovative programs in the field of journalism and mass communication that sets the benchmark of high quality learning and teaching process at the national level. We offer these programs across the country with the help of our regional network as well as study center. Same manner, many of our programs are offered through online mode with a sophisticated learning management system. SOGNMS offers programs from PhD in journalism and mass communication till certificate level. We have masters in journalism and mass communication. The eligibility is bachelor's degree, and we are introducing this program in 3 languages: Hindi, Tamil and English. Students from national and international students can join either through online mode as well as in a distance mode. We have 4 postgraduate diploma programs, specialized areas in the field of development communication, digital media, electronic media, and journalism and mass communication program. And all these 4 programs are available in distance mode. 2 programs are available in online mode, development communication and digital media. And we have specialized certificate program in community radio. IGNOU employs various media and communication tools for better teaching and learning process. School of Journalism and New Media Studies utilizes this media system
for delivering all our programs. Come and join with us for exploring a new career and enhance your media skills. सर, प्रकृति का हमारे जीवन में कितना महत्व है, और जो आउटडोर बच्चे जाके पेंटिंग्स बनाते हैं, प्रकृति को देखते हैं, उसको वो कैसे हैंडल करें, कैसे बनाएं उसको वो? जी, ये बहुत ही अच्छा प्रश्न है और हर बिगनर एक कला साधक के मन में ये बात आती ही आती है। हम्म। प्रकृति का तो बहुत ही बड़ा ही रोल है। आज हम लोग यहाँ बैठे हुए हैं तो शायद प्रकृति ने हमें बैठाने के लिए यहाँ पे एक ऊर्जा दिया हुआ है, एक एनर्जी दिया हुआ, ऑक्सीजन है, जी तभी तो हम बैठे हुए हैं। जी जी। और हर एक कला साधक को, एक बिगनर को, और जो थोड़ी सी फीलिंग रखता है क्रिएटिव आर्ट वर्क से, तो सभी नेचर को पसंद करते हैं। चाहे हम पहाड़ों की हम बात कर लें, हिमाचल है, उत्तराखंड है, हर स्टेट के अपने एक प्रकृति ने दिया हुआ है। तो ऑब्जर्वेशन बहुत ज़रूरी होता है। दबाव में मैं अपने विद्यार्थियों को बताना चाहूँगा कि आप किसी दबाव में आप नेचर के बीच में ना जाएं, ताकि आपने इस विषय को लिया हुआ है तो जब तक आप आउटडोर में नहीं जाएंगे, प्रकृति के बीच में नहीं जाएंगे, तब तक इमेजिनेशन को परिपक्व भी नहीं करेंगे। जब हम चीज़ों को देखेंगे ही नहीं, उसको महसूस नहीं करेंगे, उसको प्रैक्टिस नहीं करेंगे, तब तक हम अपने कल्पनाशीलता को परिपक्व नहीं कर पाएंगे। तो हर विद्यार्थी को, एक कला साधक को प्रकृति के बीच में जाना ही जाना है। वहाँ जाकर बात आती है स्केचिंग और ड्राइंग की। अब है कि प्रकृति के बीच में हम्म आप, एक होता है कि प्लान करके जाते हैं, हम्म एक होता है कि आप थोड़े देर के लिए कहीं रुक गए। हम्म तो थोड़ी देर में यदि आप रुक जाते हैं तो आपके पास एक छोटा सा स्केच बुक होना चाहिए, करिएबल स्केच बुक होना चाहिए, पॉकेट स्केच बुक होना चाहिए, और पेन या पेंसिल होना चाहिए। तो पेन भी आप रख सकते हैं, कोई एक माध्यम रख सकते हैं कि आपके पास, जैसे एक उदाहरण के तौर पे मैं बताऊं कि यदि आप पहाड़ों में जा रहे हैं, बस से यात्रा कर रहे हैं, तो ब्रेक होता है, थोड़ा सा बस वाले रुकते हैं, तो उस 10 मिनट के ब्रेक में आपके पास यदि स्केच बुक है, पेन है, तो क्विकली आप किसी भी स्केच को कर सकते हैं। अब है कि नेचर में आपको क्या चीज़ प्रेरित किया। हम्म होता है कि ट्री के फॉर्म्स आपको प्रेरित किए, या उसके पत्तियों ने प्रभावित किया, कि ओवरऑल एक कंपोजिशन आपको प्रेरित किया। तो हर एक विद्यार्थी को प्रकृति के बीच में जाना ही जाना है और वहाँ प्रैक्टिस करना है। जी यदि मैं सर्टिफिकेट के विद्यार्थियों की बात करूं, चाहे वो अप्लाइड आर्ट के विद्यार्थी हों या पेंटिंग के विद्यार्थी हों। जी, प्लीज़। किस पॉइंट्स पे हमें ज़्यादा काम करना चाहिए बिगनर होने के हिसाब से? बहुत ही अच्छा प्रश्न है कि आप यदि शुरुआत ही कर रहे हैं
फाइन आर्ट्स में जाने के लिए, और अभी तो एडमिशन का सिलसिला चल ही रहा है, तो बहुत से ऐसे हमारे विद्यार्थी होंगे जो प्रवेश परीक्षाओं के लिए तैयारी कर रहे होंगे। किसी को बैचलर ऑफ फाइन आर्ट्स में जाना है, किसी को फैशन डिज़ाइन के लिए जाना है, किसी को एनआईडी में जाना है, किसी को आर्किटेक्ट इंजीनियर बनना है। तो जी। उसके लिए हमारी जो तैयारी होनी चाहिए, बेसिक रूप से हमें ज्योमेट्रिकल ऑब्जेक्ट स्टडी करनी चाहिए, ह्यूमन फिगर करनी चाहिए, नेचर स्टडी करना चाहिए और ऑब्जेक्ट स्टडी करना चाहिए। उसके साथ साथ स्केचिंग से लेकर ड्राइंग तक की प्रैक्टिस होनी चाहिए। और यदि आप एंट्रेंस की तैयारी कर रहे हैं तो आपको एक दिन में कम से कम एक स्टिल लाइफ, एक स्थिर चित्रण करना चाहिए, उसके साथ साथ कंपोजिशन करना चाहिए। और आउटडोर स्केचिंग बहुत ही ज़रूरी है। आप जिस शहर के में रहते हो, आप भारत को ऐसे डिवाइड कर लें कि आप मेट्रो सिटी है, उससे थोड़ा सा कम का विकसित शहर है, गांव है। तो आप यदि गांव में हैं तो गांव में रह रहे हैं तो वहाँ के जो इन्वायरमेंट है, वहाँ के जो भवन हैं, झोपड़ी है, पक्के मकान हैं, पशु पक्षी हैं, प्रकृति है और मानव है, उसके ड्रेस क्या है, ड्रेस पहनने का है, ऑर्नामेंट क्या है, उसको कैप्चर करेंगे। यदि मैं कहूँ कि यदि उड़ीसा का विद्यार्थी जो है दिल्ली के मेट्रो स्टेशन या मेट्रो के बाहर का इन्वायरमेंट तैयार करें, वहीं से कल्पना करके तो नहीं हो पाएगा। वो अपने ही आसपास के वस्तुओं को, मानवाकृतियों को, वहाँ के रहन सहन को यदि वो ड्रॉ करते हैं, स्केच में करें, उसके बाद उसको कंपोजिशन में ले जाएं, शेडिंग के माध्यम से करें, तो वो ज़रूरी है। और एक बिगनर के लिए सबसे बड़ी बात है कि ज्यामितीय रूपों का उनको एक नॉलेज होनी चाहिए। हम प्रकृति में देखते हैं तो कि सारे जो प्रकृति में वस्तुएं विद्यमान हैं, वो सारे ही ज्यामितीय रूपों से ही निर्मित हुए हैं। उसको आप एक अलग से देखेंगे तो कहीं पे सर्किल है, कहीं पे ट्रायंगल है, कहीं पे स्क्वायर है, कहीं पे सिलेंडर है, जी। सारे जगहों पे उसका यूज है। तो यूज़ होता है। पहले हमें ज्यामितीय रूपों को भी ध्यान से देखने की ज़रूरत होती है, उसके बारीकियों को समझने की ज़रूरत होती है। और प्रैक्टिस के लिए उसके माध्यम से हम जीवंत लाइफ स्केचिंग में जाएं। आउटडोर में ह्यूमन फिगर की बात करें, एनिमल तो बहुत ही थोड़ा ह्यूमन के बाद ही एनिमल को रखें, क्योंकि यदि एनिमल फिगर की स्टडी हम करेंगे तो थोड़ा सा प्रैक्टिस की ज़रूरत होती है। और आप शुरुआती दौर में हैं और तुरंत मतलब प्रैक्टिस ही स्टार्ट हम एनिमल फिगर से करते हैं, तो आपका जो स्किल है बहुत परिपक्व नहीं हुआ है, तो आपको बोरियत महसूस होगा और आप उसको अरुचि के से आप उस विषय को छोड़ पाएंगे। तो आप सरल से कठिन वस्तुओं का चयन करें और सरल से कठिन प्रैक्टिस की तरफ जाएं, जिसको आपको प्रैक्टिस में आपको मदद भी मिलेगी। और बिगनर के लिए स्केचिंग बहुत ही मस्ट है। जैसे हम खाना खाते हैं, जैसे हम ऑक्सीजन ले रहे हैं जीने के लिए, वैसे अपने इस विधा के माध्यम से, अपने करियर के पॉइंट से आपको प्रैक्टिस करने की ज़रूरत पड़ती है। यदि प्रैक्टिस हम नहीं करते हैं तो आपके हाथों में, आपके वो प्रैक्टिस के माध्यम से आपका परिपक्वता नहीं आएगा, आप बनाएंगे कुछ, बन जाएगा कुछ। तो बेसिक चीज़ें यही हैं कि एक बिगनर के लिए स्केचिंग और ड्राइंग बहुत ज़रूरी है। इंडोर स्टडी होनी चाहिए, आउटडोर स्टडी होना चाहिए, ऑब्जर्वेशन होना चाहिए और प्रैक्टिस बहुत ही ज़रूरी है। सर, एक सवाल आया है जी कि जो इमेजिनेशन होती है, जी तो उसको कैसे हम अपने माइंड में रखें, कैसे हम उसको सोचें और मानव शरीर के अंगों के साथ हम जी उसको कैसे बनाएं, जी ये सवाल आया है, जी जी जो कि शायद मेरे ख्याल से इस वक्त बहुत इम्पॉर्टेंट है जी हम लोगों के लिए। इमेजिनेशन की बात आपने किया। इमेजिनेशन कल्पना ही एक नए सृजन को जन्म देता है, जी नव सृजन को जन्म देता है। यदि कल्पना न रहे तो नव सृजन हम नहीं कर पाएंगे। जी जी और इमेजिनेशन तब परिपक्व होता है, मैच्योर होता है, जब हम प्रैक्टिस करते हैं आउटडोर में जाकर।
बात हम कर लें कि हमने अपने गांव से बाहर हम गए नहीं, दूसरे प्रदेश में, और हमें कोई विषय मिल जाता है, तो उस विषय को हम कैसे चित्रित कर पाएंगे कल्पना के माध्यम से। पुनः मैं दो उदाहरण में लेता हूँ। एक राजस्थान का हमारा विद्यार्थी है, कला साधक है। जी एक नॉर्थ ईस्ट का कोई भी है, नागालैंड है, आप त्रिपुरा की बात कर लें। जी हम त्रिपुरा के विषय वस्तु को या वहाँ की बिहू डांस की हम बात कर लें, और राजस्थान के कोई कालबेलिया डांस की हम बात कर लें, तो कालबेलिया को पेंट करने के लिए प्रैक्टिस तो हमने किया नहीं है कि हम उसको बना पाएं। तो चित्रित करने के लिए उस विषय को हमें वहाँ के इन्वायरमेंट में रहना पड़ेगा, प्रैक्टिस करना पड़ेगा, और अपने मस्तिष्क में उसको बैठाना भी पड़ेगा, जब वो सबकॉन्शियस माइंड से होते हुए हमारे सरफेस पे आएगा। तो इमेजिनेशन को परिपक्व करने के लिए हमें अनवरत महसूस करना है और प्रैक्टिस करना है। दो बातें होती हैं, कभी कभी हमारे दिमाग तो चलते हैं, कल्पनाशील तो है ही है, लेकिन हाथ नहीं चलता है। जी जी जब हाथ चलेगा तो दिमाग भी विकसित होगा। तो दोनों का चलना जरूरी है, दिमाग का भी और हाथ का। तो दोनों का इसलिए मैं बोल रहा हूँ कि प्रैक्टिस उसी पे आधारित है, और कल्पना का परिपक्वता इसी पे आधारभूत होते हुए आगे बढ़ता है। तो हमारे विद्यार्थियों को मैं बोलना चाहूँगा कि प्रैक्टिस करने से ही इमेजिनेशन परिपक्व होता है। आप ऐसे कह लीजिए कि कॉन्शियस माइंड, सबकॉन्शियस माइंड और क्रिएटिविटी, वस्तु को देखना, उसको रिकॉल करना, उसके बाद सृजन में उसका इस्तेमाल करना। यदि सर्किल एक हम बनाते हैं, 3 पॉइंट की हम बात कर लें कि देख रहे हैं, देखे हुए चीज़ों को हम कल्पना में बसा रहे हैं, उस कल्पना के सहारा से हम सृजन कर रहे हैं। तो उससे क्या होगा कि इमेजिनेशन हमारा मैच्योर होते चले जाएगा। एक सवाल आया है जी। कागज़ पर अगर हम कोई भी ड्राइंग बनाते हैं, आपने कोई एक चीज चित्र लिया जी। और वो छोटा है जी। और हमें उसको बड़ा कैसा करना है, या हमने कोई बहुत बड़ी पिक्चर देखी उसको हमें छोटे में बनाना है, तो हम कैसे उसको उस कागज़ के ऊपर ड्रॉ करेंगे? जी, ये भी बहुत अच्छा प्रश्न है। जब हम अनुकृति की हम बात करते हैं, ये जी। प्रश्न सिद्ध भी होता है जब हम सर्टिफिकेट प्रोग्राम कर लें, हमें कोई भी किसी की पेंटिंग की अनुकृति तैयार करनी पड़े। होता है ना कि बहुत से ऐसे लोग होते हैं कि हमें हुसैन साहब की पेंटिंग की अनुकृति करवानी है, रजा साहब की पेंटिंग को करवाना है, लियोनार्डो डा विंसी के पेंटिंग को करवाना है, या अब रवि वर्मा की पेंटिंग की बात कर लें, जी। या यामिनी राय की पेंटिंग की, गणेन्द्रनाथ टैगोर हैं, अवनीन्द्रनाथ टैगोर हैं, बहुत से हमारे जितने भी प्रसिद्ध चित्रकार हुए हैं, उनके कृतियों का बिगर साइज की कृति है, हमें छोटे में करना है। पहला स्टेप तो यही होता है कि पूरे चित्र को हम डिवाइड कर दें, मतलब मिनिमम 4 पार्ट में डिवाइड कर लें, उसके एक खाका बना दें। पहले याद भी होगा कि जो हमारे जो एकेडमिक हमारे आर्टिस्ट नहीं रहे हैं, जो हम पोर्ट्रेट मेकर हैं, जैसे सबके गांव शहर में मिल जाते हैं, उन्होंने कहीं से भी फाइन आर्ट्स की पढ़ाई नहीं किया है, लेकिन पोर्ट्रेट बहुत अच्छा बनाते हैं। तो वो ग्राफ बनाते हैं, ग्राफ में है कि वो कितने भागों में उसको डिवाइड करते हैं। तो उसमें एक होता है कि उतना डिवाइड करने का पेशेंस आपके पास है या नहीं है। कुछ लोगों में होता है, कुछ लोगों में नहीं होता है। और जब फाइन आर्ट्स हम कर लेते हैं तो उस उतने ग्राफ में नहीं जाते हैं। ये भी हम 4 भाग में यदि मैं बांटने की बात कर रहा हूँ तो ग्राफ ही है, लेकिन बोल्ड ग्राफ है। उस पूरे पेंटिंग को 4 भागों में डिवाइड कर दिया। अब वही ग्राफिंग जो है अपने पेपर पे हम 4 भाग में डिवाइड कर दें। अब पहले भाग में जितने हिस्से आए हुए हैं उसको एक मेजर कर लें, दूसरे भाग में जितना आया उसको कर लें,
तीसरे में आया उतना कर लें, चौथे में इतना बन गया। अब पहले भाग को भी हम 4 भागों में डिवाइड कर दें, है ना, फिर उसमें भी ग्राफिंग कर लें और सेम करें, तो ग्राफिंग से मतलब प्रतिकृति तैयार होने लगती है। यही एक तरीका है। ये तो हो गया कि हम एक ज्यामितीय रूप में उसको ड्रॉ कर लिए, उसके बाद डिटेलिंग्स में चले गए, उसके बाद कलर है, टोन है, फाइनल हाइलाइट्स देने होने की बात है, वो तो अनुकृति ऐसे ऐसे ही हम डिवाइड करके उसकी अनुकृति को तैयार कर पाते हैं। और ये भी एक कला साधक की बात है, कला साधना की बात है, प्रैक्टिस की बात है। यदि हम प्रैक्टिस नहीं करेंगे तो जो काम हमें 1 घंटे में रिजल्ट देगा वो हम 10 घंटे में करेंगे। जो अनुकृति हम 1 घंटे में करने वाले हैं वो 10 घंटे में करेंगे। वहाँ प्रैक्टिस काम आता है। और प्रैक्टिस से आपका दिमाग भी होता है, कैलकुलेट करने लगता है दिमाग कि हमें ऐसे 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 करना। और एक टाइम ऐसा आता है कि जो मैंने खाका बनाने की बात कही है वो खाका भी बनाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। जैसे इसका अच्छा उदाहरण है कि आप जब लाइव पोर्ट्रेट करते हैं, बिना ग्राफिंग के करते हैं, आप डायरेक्ट करते हैं ताकि वो प्रैक्टिस में आपके कि ऐसे होना है। बिल्कुल। तो ये चीज़ है। एक बात बताइए सर कि मानव शरीर के विभिन्न अंगों का अनुपात कितना होना चाहिए? मान लीजिए चेहरा हमारा इतना है, तो हमें किस हिसाब से क्या रेशियो रखना है कि उसका हाथ कितना बड़ा हो, पैर कितना बड़ा हो, उसका आकार कितना हो, और जी किस तरीके से हम उसको बनाएं? जी जी, ये भी बहुत अच्छा प्रश्न है। और क्यूरियोसिटी होती है जब कोई एक बिगिनर होता है, सीखना स्टार्ट ही करता है, जी। तो पहले ह्यूमन फिगर ही बनाने का प्रयास करता है। और बनता भी है, नहीं भी बनता है, हम प्रयास करते रहते हैं। यदि आपने षडंग पढ़ा होगा तो प्रमाण की बात पढ़ा होगा, उसमें विष्णु धर्मोत्तर पुराण के चित्रसूत्रा का भी जिक्र किया गया है, जिसमें ताला मतलब ताल को बताया गया है कि एक पूरा फेज जो है 9 ताल में है। और हमारा आधुनिक जो प्रपोर्शन है, जो आइडियल अभी मान्यता है, जो लियोनार्डो ने डिवाइड किया है, तो 7.5 माना जाता है। मतलब पूरे चेहरे का 6.5 गुना, या पूरा चेहरा लेकर 7 साढ़े 7 गुना माना जाता है। पूरा एक भाग मान लेते हैं, गर्दन से ये जो है आधा मान लेते हैं। अच्छा। और कंधे से नाभि तक 2 भाग मान लेते हैं, नाभि से घुटने तक 2 भाग मान लेते हैं, और घुटने से पैर तक 2 भाग मान तो 2 3 6 हो गया, एक 7 हो गया, और आधा 7.5 हो गया। तो ये तो हो गया 7.5 गुना। और वर्टिकल लाइन से यदि पूरे शरीर को फ्रंट से यदि बांट देते तो 2 सिमेट्रिकल फॉर्म में बट जाता है। मैंने ऑब्जेक्टिव में भी, ऑब्जेक्टिव ड्राइंग में बताया ना, सिमेट्रिकल नॉन सिमेट्रिकल। तो ह्यूमन फिगर में तो सिमेट्रिकल ही है, जितना इधर होगा लेफ्ट उतने में राइट होगा। अब कंधे का प्रोपोर्शन देखते हैं। यदि कंधा गले से हम चौड़ाई देखें चेहरे के, उस चौड़ाई के बराबर होता है कंधे की चौड़ाई। अच्छा। और कंधे से लेकर भुजा की है तो बाहु प्रबाहु 2 हिस्सों में भुजा डिवाइड है, तो 1.25 गुना 1 है और 1.25 गुना 1 है, तो 2.5 गुना हो गया आपका। और मैंने कहा कि ताला, आप लोग जितने भी विद्यार्थी अभी देख रहे हैं या आम जन देख रहे हैं, तो आप अपने ही चेहरे को नापिए, पूरा एक ताल है। पूरा जो आपका हथेली है पूरे फेस का एक ताल है, पूरा आता ही है, पूरे फेस के बराबर आता है। तो इतना है। और पैर की जो भंगिमा की हम बात करें, उसमें पर्सपेक्टिव लागू होता है। शायद पर्सपेक्टिव से भी क्वेश्चन आए होंगे, इस पे हम बात करेंगे। तो ये हमारा प्रपोर्शन है। और जब हम OBL 006 पढ़ेंगे प्रैक्टिकल का, उसमें विस्तार से हम अपने विद्यार्थियों को इसके बारे में बताएंगे। सर, जो हमारी पशु होते हैं, जो हमारे पशु की आकृति होती है, तो वो ज़्यादा आसान होती है या मानव की जो आकृति होती है वो ज़्यादा आसान होती है, या हम उन दोनों को किस तरीके से तालमेल करते हैं? जी। जैसे आपने अभी कहा कि जो मानव की आकृति जो बनाते हैं तो उसमें एक रेशियो रखते हैं। अब क्या पशुओं के साथ भी यही चीज़ है, जो हम पशु की आकृति जब बनाएंगे? जी। पूरे पृथ्वी में मानव
आकृति का जो प्रोपोर्शन है लगभग सेम सा है, लेकिन पशुओं का, हम एनिमल्स का प्रोपोर्शन देखें तो बहुत तरह के हमारे जीव जंतु हैं, पशु हैं। जी। तो उसमें कुछ आइडियल हमारा लागू नहीं होता है। जैसे हम सबसे छोटे से चूहे मतलब रैट की हम बात करें, वहीं कैमल की बात करें, तो चूहे के भी प्रपोर्शन होता है कि उसका हेड का 2 गुना पूरा बॉडी होगा, टील तो जैसा भी होगा, ये होता है। और कैमल का गर्दन का प्रपोर्शन हम देखते हैं कि गर्दन का जो लंबाई है उसके जो हेड है उससे कितना गुना है और बॉडी कितना है। तो आइडियल लोग क्या है कि प्रपोर्शन बनाते बनाते होता है, जब हम प्रैक्टिस करते हैं तभी उसमें जाएंगे। लेकिन हम ये नहीं कह सकते कि ह्यूमन में 7.5 गुना है उसके लेकिन लगभग वही प्रपोर्शन होता है हर, मतलब ऐसे कि 7.5 नहीं होगा, लेकिन हर हेड से ही मेजरमेंट हम कर सकते हैं पशु और ह्यूमन का जो भी है। तो सर अब आप जो पर्सपेक्टिव वाली बात कर रहे थे जी जी ड्राइंग की, जी तो जी उसके बारे में आप कुछ हमारे लर्नर्स को बताइए, जी जी क्योंकि काफ़ी लोगों ने उसके लिए अपने क्वेश्चंस भेजे हैं। जी जी पर्सपेक्टिव का हिंदी होता है क्षय वृद्धि, जी। घटाव और बढ़ाव। क्षय मीन्स घटाव, वृद्धि मीन्स बढ़ने का होता है। इन शब्दों में ही आपका मीनिंग छुपा हुआ है, घटाव बढ़ाव। दो वस्तुओं के बीच के दूरी को नापने का एक माध्यम है पर्सपेक्टिव। यदि ग्रुप ऑब्जेक्ट हम रखते हैं, ग्लास है, बाउल है, मग है, बकेट है, यदि बकेट पीछे है और आपका मग आगे है, आप देखेंगे कि मग पहले दिखेगा, बकेट बाद में दिखेगा, क्योंकि हमारी रेटिना उसी हिसाब से देखती है और ये रेटिना पे ही आधारित होती है। तो वस्तुओं को आगे पीछे हम पर्सपेक्टिव के माध्यम से ही करते हैं। एक शब्द और भी आपने देखा होगा, हमने ह्यूमन प्रोपोर्शन एक आइडियल प्रोपोर्शन बताया, वो गणितीय है, मैथमेटिकल प्रोपोर्शन है कि इतना 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 होना चाहिए। यदि जी। आप रेलवे स्टेशन पे जाएं या कहीं और भी जाएं, यदि व्यक्ति लेटा हुआ है तो आप देखते हैं कि पैर पहले दिख रहा है और हेड पीछे दिख रहा है। फोर शॉर्टनिंग वहाँ काम करती है। और फोर शॉर्टनिंग भी क्या है कि वो क्षय वृद्धि का पर्सपेक्टिव का ही एक पार्ट है। पार्ट होता है। तो जैसे आप कॉमिक्स में देखते हैं, हमने बहुत बचपन में नागराज के कॉमिक्स को देखा है, चाचा चौधरी के देखा है, तो पैरों का एक्शन वाले जो मूवीज होते हैं वहाँ पर्सपेक्टिव को हम ज़्यादा समझ पाते हैं। जैसे कोई एक्शन में मार रहा है, उसके पैर को ही प्रोमिनेंट किया जाए तो पैर बड़ा होगा, हेड छोटा होगा, लेकिन ओवरऑल देखा जाए तो पूरा का पूरा वो प्रोपोर्शन उसका काम करता है। तो पर्सपेक्टिव का यही एक माध्यम है कि किसी दो वस्तुओं के बीच के दूरी को आगे पीछे दिखाने का एक माध्यम पर्सपेक्टिव। अब पर्सपेक्टिव को कैसे दिखाया जाता है? अब केवल लाइन से ही पर्सपेक्टिव दिखाने की बात हो, 3-4 ऑब्जेक्ट रखा हुआ है तो उसमें रेखाओं की जो मोटाई है उसके माध्यम से भी हम दिखा सकते हैं। आगे की वस्तु को थोड़ा मोटी लाइन में दिखाएं, पीछे जाते जाते लीनियर लाइन में हो जाए। उसके बाद टोन के माध्यम से दिखा सकते हैं, आगे की वस्तुएं डार्कर होती, पीछे की वस्तुएं थोड़ा हल्की होती जाती हैं। और पर्सपेक्टिव का एक अच्छा सा सबसे अच्छा उदाहरण है कि जब ट्रेन या रेल की पटरी को वैनिसिंग पॉइंट वाली जो बात है, ये सारे ने बचपन दिया कि दो लाइनें जाके मिल जा रही हैं, जहां हमारी रेटिना जाके दोनों एंगल को मिला दे रही है, वहां पर्सपेक्टिव है। पर्सपेक्टिव कई तरह के होता है, स्काई है, एरियल है और बर्ड स्काई है। तो जब हम OVL 006 पढ़ेंगे उसमें पर्सपेक्टिव को भी अच्छे से हम पढ़ेंगे। बाकी स्टिल लाइफ जो हमारा OVL 005 है उसमें भी हमने पर्सपेक्टिव के बारे में बड़ा ही अच्छे से उसको बताया हुआ है। और मैंने स्वयं प्रभा में स्टडी फ्रॉम स्टिल लाइफ के वीडियोस हैं, उसके लिंक्स में मैंने आप सभी को जनरेट किया हुआ है, दिया हुआ है मेल के थ्रू, आप उसको भी देखें ताकि इसके बारे में और भी डिटेल से पता एक चले। बात बताइए, जब दो चीज़ों की एक समान दूरी होती है हाँ, तो
उसको हम कैसे पहचानेंगे? जैसे एक चीज़ आगे रखी है, दूसरी उसके पीछे रखी है, अब हम सामने से इसको बना रहे हैं, तो हमें उसके बीच की जो दूरी है वो नज़र तो आ नहीं रही है, तो हम कैसे उसको तय करेंगे? मतलब कैसे समझेंगे उस चीज़ को? क्योंकि अगर हमने ज़रा सा भी गड़बड़ किया तो पीछे की चीज़ तो बड़ी हो जाएगी। अब एक है कि आपको अचानक से कोई दो वस्तुएं दिखी, जी। और एक है कि हम क्लासरूम में ऑब्जेक्ट स्टडी प्रैक्टिस के दौरान दो वस्तुएं रखते हैं। जी। तो हमेशा ये ध्यान में रखें कि जब हम असेंबल करते हैं ऑब्जेक्ट को, तो उसके हाइट के अकॉर्डिंग ही उसको हम रखते हैं। ठीक हाइट है। के अकॉर्डिंग हाँ, रखते हैं। जी यदि जी। इक्वल दो ऑब्जेक्ट हैं तो उसमें आपका एंगल काम करेगा कि आप थोड़े से ऊपर स्काई व्यू से आप देख रहे हैं या कि नीचे। ओह। एकदम फ्रंट से देखेंगे तो वो दिखेगा ही नहीं, क्योंकि उसके क्षेत्रफल, उसका आकार एक ही है, तो वो नहीं दिखेगा। लेकिन हमें जब रखने की बात होती है तो ऑब्जेक्ट को रखने का तो हमें जो एंगल चयन पे होता है ध्यान देना उसमें पड़ेगा। देखना है कि उसका आकार कैसे है, उसमें टोन कैसा। एक ही टोन का तो दोनों ऑब्जेक्ट नहीं रख रहे हैं, टोन में भी रंग में भी अंतर हम कर सकते हैं। तो इन सारी चीज़ों को हम ध्यान में रखकर वस्तुओं को रखने का प्रयास करते हैं। सर, कुछ आप अभी कुछ रंगों के बारे में बता दीजिए कि किस तरीके से बच्चे उनको, स्टूडेंट जो हैं, क्योंकि बहुत से ऐसे होते हैं कि अगर वो बनाना शुरू करते हैं तो वो पूरा एक ही टोन में सब चला जाता है, तो चूँकि किन चीज़ का वो ध्यान रखें उसे करते वक्त? ये तो बहुत ही अच्छा भी प्रश्न है, और शायद एलिमेंट्स ऑफ स्केचिंग सर, ड्राइंग थोड़ा है, सा उससे अलग तो है ये, थोड़ा सा अलग है। लेकिन ये आया है क्वेश्चन तो हाँ, मैंने आपसे पूछा है। ये भी प्रैक्टिस पे है, आधारित ही है। और रंगों का जो चयन है कि हम ओपैक में काम करना चाह रहे हैं कि ट्रांसपेरेंट में काम करना चाह रहे हैं, तो आप वो सभी दर्शकों से इस प्रश्न के लिए शायद हमारा जब काउंसलिंग होगा OVA 006, जी उसमें हम विस्तार से करेंगे, क्योंकि समय की बाध्यता है और जी प्रश्नों का तो बड़ा अभी सिलसिला चलता ही रहेगा, और हमारे पास संग्रह भी बहुत ज़्यादा है प्रश्नों का। जी। तो शायद हम अपने इस प्रोग्राम के जो काउंसलिंग प्रैक्टिकल का ऑनलाइन हम कर रहे हैं व्यास के थ्रू, तो आप सभी को हम लोग इसमें विस्तार से बात करेंगे। और आप लोगों के बहुत ही अच्छे प्रश्न आए थे, और आप लोगों ने इससे पता चलता है कि क्यूरियोसिटी है आप जी लोगों में प्रायोगिक विषय को जानने की और सीखने की। और हम प्रयास करेंगे कि जो आपकी इच्छाएं हैं हम आपको संतुष्ट कर पाएं और आपका कला कौशल का विकास कर पाएं। धन्यवाद फौजिया जी कि धन्यवाद आपने सर। इनवाइट किया। धन्यवाद सर आपका, आपने हर प्रश्न का जवाब बहुत अच्छे से दिया, और मैं ये आशा करती हूँ कि सभी जितने भी हमारे देखने वाले हैं, दर्शक हैं, जितने भी हमारे स्टूडेंट्स हैं, जो हमारे बिगनर्स हैं, लर्नर्स हैं, उनको उनके सवालों के जवाब मिल गए होंगे। और मैं ये आशा करती हूँ कि आगे भी वो हमें इसी तरीके से अपने क्वेश्चंस, अपने सवाल, अपने जो उनके दिल में जो भी है वो हमें भेजें, ताकि हम सर से वो सारे डाउट क्लियर कर सकें। और जितने अच्छे से, जितनी डिटेलिंग शायद आज सर ने आप लोगों को, हम लोगों को जो भी बताई है, मुझे भी बताई है, मैं भी एक स्टूडेंट ही हूँ, तो शायद अब वो मेरे लिए बहुत कारगर साबित होगी। मैं बहुत बहुत धन्यवाद देती हूँ नमस्कार। सर। धन्यवाद। धन्यवाद। Are you a fresh graduate? Do you want to fulfill your educational aspiration by pursuing higher education in various interdisciplinary and multidisciplinary areas like environmental science, environment and occupational health, philosophy, sustainability science, folklore and culture studies? If yes, the School of Interdisciplinary and Transdisciplinary Studies offers various programs like Master's Program, Graduate Program, Postgraduate Diploma, Certificate and Appreciation Program. The school offers 5 Master's Programs: Master of Science
Environmental Science. The eligibility criteria for MSc Environmental Science is graduate in Science, BTech, BE, Agriculture graduate, Forestry graduate and Veterinary graduate. School also offers Masters in Environment and Occupational Health, Masters in Sustainability Science, Masters in Philosophy and Masters in Folklore and Culture Studies. The eligibility criteria for these 4 Masters program is graduate in any discipline. School also offers various socially relevant and need-based PG Diploma program like PG Diploma in Sustainability Science, PG Diploma in Environment and Occupational Health, PG Diploma in Folklore and Culture Studies and PG Diploma in Migration and Diaspora Studies. The school also offers PG Certificate in Climate Change and Avshist Prabandhan mein Praman Patra. The school also offers 2 doctoral programs, PhD in Environmental Science and PhD in Interdisciplinary and Transdisciplinary Studies. Hello learners, welcome to this live teleconferencing session. Today we are going to discuss one of the very pertinent topic from your program, MA Education program. Today's discussion title is Sampling in Educational Research and it's part 1. And further we will be discussing Sampling in Educational Research part 2. Friends, before starting our discussion, let me to introduce myself. I, Dr. Niradhar De, Associate Professor, School of Education, Indira Gandhi National Open University. Welcome you all on my personal behalf and on behalf of my school, that is School of Education, Indira Gandhi National Open University. Friends, today's topic that has been taken from your popular program, that is MA Education. And from this program, this topic is addressing 2 different courses. First is the MES 016, that is Educational Research, which is one of the theoretical compulsory course which is included in the first year of your MA Education program. And in the second year of your program, you are supposed to do one dissertation. That course is MESP 001, that is the title of the course is dissertation. And this topic sampling, you have to study the theoretical construct, the theoretical concept of sampling from the course, that is MES 016 Educational Research, in the first year of this program. And in the second year of this program, when you will be doing the dissertation work, when you will be doing the real research work, the concept of this sampling you will be using. So that's why today's topic is addressing 2 different courses. One is the theory courses and further in the second year, that is the application oriented courses. Now let us go forward to understand the focused discussion point, the important discussion point of today's teleconferencing session. First of all, the major important points that we will be discussing in this session, that is what is a population and sample. We will be discussing the concept of population and the concept of sample. Further, why there is a need to take a sample in educational research. When we are conducting a study, conducting a research in education, why there is the need to take a sample, to draw a sample, to select a sample. And further, what are the different types of sample. So you are supposed to know, being a researcher, being
a student of MA education, you should understand that what are the different types of sample and what type of sample you supposed to select, you supposed to use in your study, and what is the rationality and what is the justification of it. And another important discussion point is how to draw a probability sampling. So friends, as I have already said that today we are discussing the first part of sampling in educational research. So that's why in this session I have taken only the probability sampling method or the probability sampling technique. So that's why you will understand in this session that how to draw a sample, how to select a sample, particularly a probability sample. And in our next session, we will be discussing the other type that's called as the non-probability sampling technique. Now let me to focus upon the very concept of the first discussion point, that is what is a population. Okay, so the very concept of population is called as an universe. Just like when we talk about population, it means we are addressing a larger entity. That larger entity is called as the universe. It may be in terms of students, it may be in terms of educational institutions, it may be a form of parents, form of teachers. So that's why, so when we talk about population, so naturally the units or the numbers are huge, numbers are large. So that's why it's called as, we can define population as an universe. And further, we can say that population may be human or non-human entities. You should understand that what is the human entity of population and what is the non-human entity of population. So friends, in educational research, when I talk about the human entity, it means the students, we conduct a study taking the students of school, students in the higher education system, in professional education. We also make parents, make community member, make teachers as the subject of our study. Okay, so we do the investigation, we collect data from these subjects. So that's why sample includes the human entity, and at the same time in educational research, sample may also include the non-human entities. You should understand that what is the non-human entities. Just like many a time we do a type of case study of any educational institutions. We just want to know the facilities available in the schools, the facilities available in different institutions. It may be higher education, professional, and other types of institutions. So that's why here we are including the non-human entities. So that's why we can say that in educational research, population includes both human entity as well as the non-human entities. Again, population may be finite and it may also infinite. So you should understand that what is the finite concept of population and what is the infinite concept of population. Many a time when we say that there is the finite number of population, that means you can count the number, you can count the number of the population. Just like if I will say that all the students in a state, those have appeared 10th board examination in the year 2022. So here we have the record, we have the number, we have the list, we can count it. So we can say that this population is a countable population. So that's why it's a finite number. But many a time we conduct study without knowing the exact number. Or I can also give the example that what is the infinite population. Just like if I will say that stars in the sky, can you count the stars in the sky? If I will say that fishes in the sea, fishes in the river, okay. Fishes in the river, I think it's not possible to count. Fishes in the sea, it's not possible to count. So many a time in educational research, we deal with the countable population and the uncountable population. So that's why the nature of population is here. It may be finite or it may be infinite. And further we can say that another feature of population, that population may be a concrete concept or it may be an abstract concept also. So you should understand that what is the concrete concept and what is the abstract concept. Concrete concept means when we can see the things, we can observe the things, and we can collect data by involving ourselves in one-to-one interaction. And many a time the ideas, the principles, and the thought processes
of the subject. It may be the educational institute, it may be the educationist, it may be the teachers, it may be the parents, it may be the students. So many a time ideas, you cannot limit the ideas, you cannot limit the thoughts. So that's why we can also conduct study on different thoughts, on different ideas. So that's why these are, we can say that, the abstract concept of population. So friends, these are the certain concept of population. Now let me to go through to understand the very concept of sample. So here you see on your screen now, you can go through a small unit drawn from a population is called as a sample. Many sample can be drawn from a single population, and if population and sample characteristics are same, we call this is a representative or good sample. Try to understand. We have already discussed the concept of population, and when we conduct a study in especially in a problem of education, we take a sample. So where to take the sample? We take the sample from the population. We draw the sample from the population. Population is usually a large concept, and from that large concept we select a group of subject, we select a number of subject, and we conduct our study on that number of subject. And here certain sampling techniques are there. By using those techniques, we can get a representative sample. A representative sample means when the sample characteristics are more or less similar with the population characteristics. That means when your sample is representing your population, means all the population characteristics are reflected in your sample, the sample that you have drawn. So that's why we can say that sample is a small unit that we draw from the population, and a good sample always represent a population. Now on your screen you might have observed now the relationship between population and sample. You see the large oval shape, it's called as the population. Let the total number or the total size of the population is 1000, and here you see many small sample units can be selected from a larger population. Just like sample 1 is having 100 unit, sample 2 is having 100 units, sample 3 is 100, 4, 5 and 6 is also 100 units. Accordingly, we can draw n number of sample from a particular population. Okay, so size of the population is your 1000, and randomly when we select 100 sample unit from the 1000 population unit, we can draw, there is the possibility that we can draw more than one sample. N number of sample we can select from a particular population. Now let me to focus upon very briefly what is the need of drawing sample in educational research. Let me to focus upon some of the important points, and further we will be proceeding to understand that what techniques and what methods can be used for drawing a sample. First of all, we do the sampling. The need of sample in educational research is just like pursuit of time and resources. Cannot do research taking the entire population, as the population is usually large in area and units. Drawing a sample is cost effective also. Conducting a study taking a sample is also technically well fit, and it also minimizes the variation in results, and sometimes it is impossible to get the entire unit of the population. I have already said that the population is always you can say very large in concept, in large in number. So that's why simply it is not possible within a very short period of time to conduct a study taking thousands of units of the population, taking lakhs of units of the population. So that's why we draw a sample from the population for conducting our study within that stipulated time. And there is a scientific technique for conducting the sample. So that's why if we select meticulously a sample by using certain methods and technique, then the error of result can be minimized, and technically it is also well fit. And we can say that a sample can also represent the population. So friends, and it is cost effective also. So these are the certain reasons basing upon which we select a sample for conducting the study, not do the study taking the entire unit of the population.
Now, let me to focus upon different types of sample, just like types of sample and sampling techniques are mostly there are two types of sample. One is called as the probability sample and other is called as the non-probability sample. Under probability sample, you see these are the certain specific methods and techniques are there, just like simple random sampling, stratified random sampling, multi-stage sampling, systematic sampling and cluster sampling. And under non-probability sampling, you see the technique just like snowball sampling, quota sampling, incidental sampling and purposive sampling. Today in this session, we will be discussing the concept of simple random sampling, stratified random sampling, multi-stage sampling, systematic sampling and cluster sampling. And in our next session, we will be discussing the non-probability sampling methods, that is snowball, quota, incidental and purposive. Now let me to focus upon the first method of a probability sampling technique that's called as the simple random sampling. Try to understand, we are using here the word that is random, and this is called as a simple random sampling technique. Just like to define the simple random sampling method, we can say that when each member or unit of the population has equal probability of being selected to the sample, the sampling method adopted is called simple random sampling. So here each and every unit of the population will be given similar chance, equal chance to be selected for the sample from the population. Okay, so here chances will not increase or chances will not reduce. Okay, so all unit will get the equal chance. Then we can say that it is a probability sampling and mostly it is a simple random sampling. So what are the techniques we can be used for selecting a sample by using the simple random sampling method? Just like tossing a coin. When you are tossing a coin, getting tail and getting head, the probability is 50-50. So here equal probabilities are there when you are tossing a coin. And further, by tossing a dice, by throwing a dice. So when we are throwing a dice, the probability of taking 1, 2, 3, 4, 5 and 6 is equal. Then in lottery method, we also many a time, it's a very popular method that's called as the lottery method. If you want to select few students among a group of 50 students, let you want to select 5 students among a group of 50 students. So what we do? We just make a list of 50 students, okay, and we write their name or their roll number or their enrollment number, and we write it in a cut paper. We fold it and mix all the names and we select any 5. And that's the very popular method that's called as the lottery method. By doing the lottery method, we can also conduct our study. And further, another method that's called as the random table method. Many a time in a random table method, you should understand that what is the very concept of random table method. Many a time, when population is very large, okay, the unit of the population is very large, and you want to select a good number of sample, a representative group of sample. So simply it is not possible by throwing a coin or tossing a coin or throwing a dice or by doing a lottery method. So that's why usually we do or we adopt another technique that's called as a random method techniques. So you should understand that what is the very concept of a random table method. Just like you see on your screen, let me to explain it with one example. Let the total unit of the population, that is 800, that's called as the N means population, and required sample size is 20% of the population, that is 20% of 800, that is 160. So population is 800 and you want to select a sample of 160. So how to do it? By using a random table method. On your screen, you see now a table is visible. Okay, example of a random table method. Here you see many rows and columns are there. In the internet, you will find such type of table. Okay, that's the random table for for selecting the sample. And here you see the population size is 800. That means if you list the population, the maximum digit will be 3. It will start from 1, 2, 3, 700, then 790, 91, 92, 93, 798, 799, then 800. So accordingly, you see the maximum digit will be 3. And here you see in this table,
the numbers, infinite numbers are there, and you see the numbers are having 5 digits. So what you have to do, you have to select any 3 digit, because your population size is 800 and maximum digit will be 3. So here you see, you can select either the first 3 digit or the last 3 digit or the middle 3 digit. Okay, middle 3 digit, just like if I'll go through the first number, 23,156. If you take the first 3 digit number, that is 231, and if you take the last 3 digit, that is 156, and if you take the middle 3 digit, that is 315. So here you have to see that which number you have to retain and which number you have to reject. But where you have to start, from which row and which column you have to start. So randomly you can start from any row and any column. Just like as an example, on your screen on this random table, you see the yellow mark lines. Let this has been started from the second row and second column. The first number is 55,542. We have decided that first 3 digits you have to take. First 3 digit is 555. So 555 number, it comes within your population list, that is within 800. So that's why this number you can retain. Further, 201, first 3 digit, you can also take this one. The next is you see 912. 912 is beyond 800. So that's why this number will not come in your population. Next is 819. It will also not come. Then 772 is within 800. It will come. 120 it will come. Then 801 will not come. Accordingly, you have to proceed without missing a number. And when 160 right numbers you will get within the list of 800, then your sampling process will end there, because out of 800 already you have received 160 numbers. So friends, in this way you can also select a sample by using a random sampling method. I have already discussed the process of random table method when I was discussing the table. Again, just I am going through it. First step is listing the population unit, that is 1 to 800. Second is size of sample, that is 20% of the N 160. Unit of sample may be from 001 to 800, I have already said. Then select a random table of 5 digit number. Decide to take the direction of taking 3 digits from the 5 digits number. I have already said that, let as an example you have to take the first 3 digit numbers. I have explained it in the table. Then randomly select a row and column, just like we have selected the first row and the first column that was reflected in the table. Then from there you have to see the first 3 digit numbers. So in this way you can select your required sample by using a random table method. So Fisher's tables you will get, Tippett table you will get. It is up to you that which random table you will use for selecting your sample. Now let us try to understand another technique, another method of probability sample, that's called as the stratified random sampling method. So here you see, sometime many strata presents in a population that should be represented equally in the sample. So many a time you will find that the population is distributed, population is grouped in many stratas. Many strata means your groups, just like male and female, boys and girls, different year of students, okay, different level of students. So here you cannot directly select a sample by using the random table, by using the simple random sampling method. So that's why you have to select here a stratified random sampling method. So let me to explain it with one example. Just like the example is, we intend to study examination result of class 10 students belonging to various groups of socio-economic status in a particular city. Just like here, the total number of population is 1500, and that includes 3 stratas, 3 groups, just like high socio-economic status, middle socio-economic status and low socio-economic status. In high socio-economic status 300 numbers are there, middle socio-economic status 800 numbers are there, and low socio-economic status 400 numbers are there. And let you want to draw a sample that is
25% of the population. So 25% of the total population 1500, that is 375. Okay. So here let us try to understand how you will select a sample of 375 out of 1500 of the population, which is distributed in 3 different groups, 3 different stratas. Just like here, I have already said that the stratas are high socioeconomic status, 300 are there. But here what you have to do, you have to select 25% from this strata, from the high socioeconomic status group strata. So 25% of 300 is 75. Then from the middle socioeconomic strata, you see the total number is here 800. What you have to do, you have to take 25% from this strata, from this group, from the middle socioeconomic strata, that is 25% of 800 is 200. Then again from low socioeconomic strata, total number is 400. Again you have to select 25% as your sample will be 25% of the population. So 25% of 400 is 100. So accordingly, if I will include high socioeconomic strata 75, middle socioeconomic strata 200, and low socioeconomic strata 100. So if I will include these 3, that is 375. So the required sample unit you got by using a simple by using a stratified random sampling method. It is not a simple random sampling method. So you select the same percentage from different strata, from different group. Okay. Then let me to explain with another example so that you can better understand that how you can use stratified random sampling in your research. Just like here you see, let you want to conduct a study taking school students, and the students are from different schools. Just like students are from the government school, then students are also from government aided schools, which is not full-fledged government school, and students are from also private schools. And here you see how many number of students are there, number of boys and girls in the population. Just like in government school, boys 400, girls 300. Then from government aided school, boys 300, girls 100. And from private school, boys 300 and girls 100. So here you have to select number of boys and girls in the sample, that is 25%. Here you see total boys is 1000 from different schools and total girls are 500 from different schools. If I will include 1000 plus 500, total population is here 1500. And if I will select 25% from the 1500, that is 375. But together at a glance I cannot do it. So that's why I have to select this 25% from different stratas. Just like here you see how many stratas are there in your population. In government school, boys and girls, government aided school, boys and girls, and private school, boys and girls. So here 6 stratas are there. What you will do, you have to select 25% from each strata. That means from government school boys, 25% you have to select, that is 25% out of 400 is 100. Then from girls, 25% out of 300 from government school, that is 75. Then from government aided school, 25% out of boys data, that is 300 is 75. Then from girls data, that is 25% from 100, that is 25. Then from private school, 25% from boys data, that is from 300 is 75, and from girls data, that is 25% from 100 is 25. Then accordingly, if I will include total boys data, that is 250 from all different schools, and if I will include total girls data, that is 125 from different schools. So if I will include 250 and 125, that is 375. So friends, accordingly you can select your sample if your population is distributed in different stratas, in different groups, just like rural and urban, boys and girls, government school, government aided school, and private school. And also in other types of strata also you can better understand from your research problem. So friends, today we have discussed, just to recapitulate, we discussed the very concept of population, then also we discussed the very concept of a sample, then what is the need of selecting a sample or using a sample, especially in doing or conducting educational research. And further we have also discussed different types of probability and non-probability sampling,
And we have also explained with illustration, with examples, the very concept of a simple random sampling and also a stratified random sampling with examples. In our next session, we will be discussing other methods of probability sampling technique. Thank you. We wear clothes on a daily basis. But have we ever wondered, where do our clothes come from? Who makes our clothing? And who are the people and the process responsible for the whole manufacturing of our clothing? If you want to know more about this, Indira Gandhi National Open University from the School of Continuing Education has launched a program which is Certificate in Apparel Merchandising. There are many benefits after doing this program. You can become a designer in various fields. It can be fashion designer, apparel designer, costume designer, or even a textile designer. One can also work as a fashion consultant. Research and development is another field which one can take up after doing this certificate course. Going into academics is another perk after doing this program. Getting into fashion houses or fashion studios as an intern is also a very good option post doing the certificate in apparel merchandising. The basic eligibility of the program is 10+2. The duration of the program is 6 months to 2 years. The program is also available for both the admission cycles, which is July and January. The exams are conducted twice a year, in June and December. So what are you waiting for? Join this program and get an enriching knowledge in the field of apparel merchandising. And to do so, you can log on to the official website of the university, www.ignou.ac.in. Dear learners, welcome to interactive radio counseling session. In this session, we will discuss about disaster relief and response. This topic will come under the BPAG 171 disaster management. In our previous sessions, we have already discussed about disaster management cycle, prevention, response, prevention and preparedness and mitigation and all. In their continuation, in this session, we'll discuss about disaster relief and response. So, as I already said that disaster management cycle has a 3 phases are there. One is pre-disaster, during disaster and post-disaster. Pre-disaster, it used to cover the preparedness, capacity building, early warning, or
whatever it comes under that, it's a knowledge creation, sir, comes under the pre-disaster. During disaster, you just think over what happened immediately after disaster. Immediately after the disaster, first thing is to happen, that is the relief and response. First thing is to be relief and the response. Response is to be how the community, how the government, how the non-governmental organization, how the other people are responding to the disasters. And another one is the relief, how we are providing the relief material and assistance to the people. Like for example, as I already mentioned many times, that disaster, whenever the disaster happens, the communities are the first responder. Okay, so we have to see here also how the response and the relief and the response. And the third one is post disaster. What happened post disaster? We have to reconstruct, we have to rehabilitate, we have to bring the resilience of the community. So in this continuation, now we will discuss about the disaster relief and response. Okay, yeah, a disaster is an event, okay, that occurs in most cases suddenly, okay, in sometimes unexpectedly. It used to cause severe disturbance to people and objects of environment. So resulting, what used to happen after this, it used to happen that the loss of life, loss of property, and the loss of health of the population also. In this situation, the causes and the disruption in the normal pattern of life, generating misfortune, helplessness, and suffering, and the affecting socio-economic structure of a region or a country or a continent to such extent that there is a need or immediate external intervention from within the country or outside. For example, if you take into that, like recently we have witnessed Kerala flood also, and Uttarakhand flood also. After that, earlier we have feel that 2004 Indian Ocean tsunami and Gujarat earthquake. Before that, super cyclone in Orissa in 1999. So what happened? Whenever if you see the major disaster, if we couldn't manage those things, then we are getting external advice or external aid from the other countries or other international level institutions only, because this disaster used to destroy decades of human effort and investment effort, and forcing the demand on society for reconstruction and rehabilitation. For example, people used to say, there is a lot of sentences, a lot of quote also there, that is a disaster and development. Okay, if you have a too much development, if you doesn't have any focus upon the environment, like, then it leads to disaster. At the same time, after the disaster, what used to happen? There is a reconstruction, rebuilding. So development used to happen. Normally, if you take into that disasters, what used to do? It used to destroy the decades of human effort. Okay, but however, the impact of disasters in terms of loss of life and property and damage to the environment can be minimized by the appropriate mitigation and the preparedness plan. Okay, commensurate with the level of resources and technologies available. Like for example, if you look into that, we can take into that, earlier we are not aware about we are not equipped with the early warning system. Now we have a full force of early warning system, and with the cooperation of throughout the world. So what used to happen, whenever the cyclone comes, we are getting information before that, and if it is a severe, we are moving the people one place to another. So these are the things that are happen because of the level of resources and the technologies available. India is one of the most disaster prone countries in the world. Okay, a major disaster occurs in India almost every 2 to 3 years. Okay, and 15 million people are affected annually from this disaster. On and on, if you say annual basis, around 1 million houses are damaged, along with the human, social, economic, and other losses also. Because of this aftermath of disaster, that what used to happen,
Okay, like for example, as I already said that there are like annual basis 1 million houses are damaged, and along with the human, social, economic, and other losses. Okay, so what used to happen? So in the aftermath of the disaster, the immediate need is that to relief to provide to the victims. Do you think that, like for example, if you take it the for example of earthquake, after the earthquake immediately will you start the reconstruction of building? No, we used to start the immediate need is that of relief to be provided to the victims. So what are the immediate relief we will discuss in the later of the session. Okay, this falls under the parameters that response guides into being after the disaster cause enormous devastation. Okay, so the response is ensured so that at the immediate instant some relief is made as possible. Like if you look into that, relief work is bottom line, about the bottom line of ensuring basic minimal necessity that relief must secure, and basic relief attempts to secure survival by ensuring that people has to access the four things. So what used to happen after the disaster? We have to provide the sufficient drinking water and sanitation, and sufficient food, and basic medical care, and the shelter from the weather. Okay, this is the fourth thing, is the major thing, that is, so we have to provide immediate relief and aid, that is sufficient drinking water and sanitation, sufficient food, basic medical care, and shelter from the weather. So once you have provided, okay, once you have provided, these are the immediate relief. We can say that first aid also, if any accident happens, so these are the activities, are first aid kind of activities. Okay, so now let us move into the what are the disaster relief measures and methodologies. Okay, so what are the disaster relief and measures? Like once the disaster happened, the first thing is to be evacuation. What do you mean by evacuation? Like for example, if you have affected by the earthquake, so immediately we have to, that government, our neighbors, our community used to evacuate the victim to the other places. Okay, in the event of impending disaster, the first step towards relief to be provided in the area concerned through evacuation. Okay, it is carried out the purpose of ensuring safety of the people. Thus it involves shifting of population from the risk areas of the concerned disaster to safer place, which could be a cyclone shelter, a concrete building, and higher altitude for a temporary shelter. Like for example, if you took into that coastal area, you can find the cyclone shelter is available in the most of the places. So whenever the cyclone has come, before that the government or the state government or the local level people coordinately, they used to shift over the people to the cyclone shelter. Okay, so this kind of evacuation is as a different types, namely one is the preventive, protective, rescue oriented. So what do you mean by preventive? Preventive means it is used to happen before disaster. Like for example, earthquake and earthquake, you can't you can't predict. Okay, but at the same time, if you take into the flood or flash flood, you can't predict. But if you take into the cyclone, okay, if it is a cyclone, then we have to do it before that this preventive type of evacuation has been done much before the disaster actually strikes. So another one is the protective. So what do you mean by protective? Protective is it is a precautionary measures to guard against the spread of disease or impending disasters. Like for example, if you take into that flood kind of a situation, so when it is a flood and water related, waterborne disease, it used to, it used to spread, it is to spread more. So we have to take protective. So we have to move the victims to the one place to another places. So another one is the rescue oriented. Rescue orientation is that focusing on rescue operation whereby the aftermath of disaster, the inhabitants or the victims are to be moved to identify places in the safe areas. Okay, so for example, rescue oriented, like for example, if you see earthquake, if the damaged building, the people can't stay in the damaged building, so immediately you can predict another earthquake also, another one also. So people has to be for protective, for rescue manner, so they have to move into the another place. For if you want to make evacuation to be effective, if you want to make evacuation effective, there is a requirement of timely and accurate warning, and clearly identified escape routes, arrangement for transportation, cooperation of the people,
of affected area and coordination among various stakeholders involved in the process. Like for example, we have to get a, if you want to need the efficient evacuation, first thing you need a accurate warning. That is called that early warning system. We used to get information through various ways nowadays, TV, social media, and whatever the ways we are getting the information, and clearly identified escape route, and you have to arrange the transportation and cooperation among the people of the area. For example, if you take into that, if you go any malls, any multi-speciality hospital, you can find that they have a given the emergency route. Even buses also they have a given a emergency window. So these are the one of the factor for the do easy the process of evacuation at all. Okay, evacuation could be of great relevance if carried out effectively. It gets proud, like for example, in 2014 violent cyclone where a large scale evacuation was carried out, leading to a minimum death toll. Okay, though that if you have to see that region suffered damage million of dollar and affected the livelihood of 13 million in October 2013, but that level of loss of life has been reduced a lot. Disaster means, like for example, I want to make you remember one thing, that you can't avoid the disaster, but you can reduce the impact of the disaster. That's what we are doing that also, and that's what disaster management, the basic mode of disaster management is that one only. In that violent cycling, due to we got effective information and all things, so we have moved the people one place to another place in a timely manner. We have reduced the death toll, I think 3 minimum toll less than 10 only. Okay, but if you look into that, but loss of livelihood is it's too much, and loss of property is too much, that we can't avoid it also. Only thing is we have reduced the minimal of life, that is more than enough. So for doing effective evacuation, we have to follow the some kind of a steps. First step is the determine the need. Okay, whether you have to first you have to check whether there is a need for total or partial evacuation. Okay, sometime what will happen, you have to evacuate all the people without any manner. So first you have to determine the need, whether you have to move the people total or only partial only. And after that you have to find out the relocation area, identify relocation area. Where do you want to keep those people? So you have to select that place should be free of hazards and easily accessible, and then communicate. So communicate to everyone involved in about the need to evacuate, and update them, and the location of shelter also, and pre-designate route. You have to make you have to prepare a route how to move people, and verify routes periodically. You have to make them. Like you can make, like for example, whenever you are making a disaster management plan, so you can mention that route and all. So you have to periodically you have to check, okay, whether it is a proper, whether it is in a proper manner, whether we can move the victims without any hassles and all. So these are the things are there. And final step is the report the evacuation. Okay, so we have to avoid duplication or any other efforts or risks. So first you have to report the governmental emergency personnel about the evacuation and all. So this was the about the evacuation. So after evacuation done, another steps to for disaster response is that search and rescue. Commonly we used to call it the SAR, SAR, search and rescue. Search and rescue is at most importance in ensuring people's safety. Okay, the process needs carried out after the disaster strike an area. It carried out by the local who are the first responders, NGOs, voluntary organization, and emergency agencies. So search and rescue operations are moved to mean to save as many many trapped people as possible. Okay, the basic aim of search and rescue is that it aims the survival of the maximum number of affected persons. It is normally and preferably carried out with the help of people with the area concerned, and also have the assessment of the trapped victims and all. For example, if you take into that, like in your area, take on a particular district, okay, if the disaster has been struck, do you think that the government will come and after that will you start? No, it's not possible.
The government has to focus upon the all the entire district, but first responder is the community, so they only know about the whoever they're staying in that place. So they are the well known about that local place, so they have to do the search and rescue operation with the help of after the help of NGOs, also community organization, volunteer organization and youth groups and also. So the primarily the search and rescue operations are undertaken by the trained personnel, follow the three key principles. One is the look, listen and feel. Look means you have to see physically the incidents and make a thorough visual perception. Okay, and you have to listen to all those information from the community and government's record, and you have to assess the community data regarding people who are in danger. So mostly, if you look into that, each and every district and villages nowadays, equipped with the disaster management plan. In the disaster management plan, they have mentioned about the what are the vulnerable area, where whenever the disaster comes, where they have people has to move, how many, how many elders are in their village, how many women are there in the pregnant women are there. So these are the information used to be available in that only. So you have to compare and you have to see based upon the data. You have to see and look into that who are in the danger during disaster. And another one is the feel. Feel means it convinced regarding the facts, the gravity of the dangers involved, and one of the capacity to respond also. So you have done evacuation and then you have done the search and rescue operation. So you have done evacuation and search and rescue operation. Then what will we do next? Next unit is shelter. So where will you keep these people? Where will you keep those affected population? Okay, shelter is one of the relief measures as it provides the place for in the event of either impending disaster and the post disaster situation. It means that it is a interim housing to meet the basic needs of disaster victims. Like for example, you know that for example, shelter or cyclone, like in 2004 tsunami, it has washed away the entire villages. Then there is no place to staying for that also. So what happened? So the government or with the help of NGOs or the community members, international organizations, they have constructed a temporary shelter area, and sometimes it leads to 2 years also. So they have constructed temporary shelter to 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 improve the post disaster situation. So the prime purpose of temporary or designated shelter is to safeguard people's lives from the exposure or further suffering. So you can't have say in the same condition like earthquake affected buildings or some kind of like flood affected buildings and all. Okay, so the purpose is that to safeguard the people lives and all. Sometimes temporary shelter in the form of tents, like for example assembled structure, sometimes wood or plastic or tin also. There is a 10-point guidelines they have given that temporary shelter provision. So first thing is monitor what is going on. So what kind of a situation, so what kind of a disaster is going on. And another one is the tents. You have to maintain the standard of the relief material. Minimum standard of relief is that available, and where you have to put the location of the tents and shelter material and shelter for families with damaged dwellings and local advised shelter and transition housing and debris and the shelter units. So these are the things you have to carry out during the shelter operation. So once you have provided the shelter, then immediately what we have to do, we have to provide the distribution of food, water and fodder which it is for the livelihood agencies. Number of agencies, government, non-governmental organization do take steps the like distribution of food, water, medicine, fodder to the victims of the disaster. That that various community based organizations, they used to provide the food to the affected population and all. But the community needs have to the own stock of the said items for the purpose of consumption in between the time of disaster occurrence and arrival of the relief distribution at the affected places. So community is to be prepared to the assist the relief distribution team. They are working the community interest also. Okay, and the distribution team should not take its act that of charity or obligation, and they have to ensure the consumables are provided as many possible in the shortest period of time. Like for example, if you take that you should not provide the food like in a charity manner. You have to maintain the human rights also. You have to value the human beings also. Okay, and once after this you have done immediately, then next thing is that the clearance of debris.
clearance of debris means like that debris of collapsed building, bridges, other structures, and as well as uprooted trees and hoardings, etc., etc. Okay, they are the biggest hindrance to search, rescue, and relief operations, and they lead to the disruption of communication, service, and the transportation. Like for example, some people used to be inside the debris building, so it's very hindrance. Like for example, if you take the multi-story building, it's not easy to move people without the help of the equipments. Okay, if it is in a raw house or kacha house, it's easily we can relocate the people, but in this kind of a situation, clearance of debris is more important than only that kind of. As such, clearance of debris is the first step toward the re-establishment of transport and communication and setting up of a system to enable search and rescue operation also. Okay, and during debris clearance operation, you have to take they have to taken care as it should not, it should not problems endangering lives and property also. Like for example, uh, uh, there is a need to safeguard survivor trapped under the debris, and then attention also required not to tamper with any infrastructure and service network in the process of debris clearances at all. And first thing is that survivors can be first searched, and local community can help in the out of the operations. And also, so once you have done the clearance of debris, and then another important relief activity is the movement of injured to the hospital. Okay, movement of injured to hospital is that the local people, NGOs, and the elected members of the Gram Panchayat, local officials need to help the rescue team to prioritize the victims who have sustained more injuries for the transportation to the nearly hospital. Okay, the serious cases must be given the precedence over the less serious given the ones, and accordingly injuries should be moved to the hospital for the proper treatment and all. Like another one is the disposal of dead humans. Like disposal of dead human is like that you have to quick disposal of this dead bodies is very important for containing the spread of diseases due to the quick decay. Like for example, if you look at that, if you keep the dead body at the injury site, it may be threat to the another human being also. It is to increase the, it is to increase the diseases and is to spread various also. So beside that, decomposing human bodies, and the other side with the fast, you have to make a remove the human bodies to disposal with great care, because you have to, whenever you are removing the human body, and you have to give the great care and with the respect also. And whenever we are disposing of the human body, then you have to focus upon the religious cultural value, and you have to done that those procedure whenever you are moving the disposal of dead bodies. And another thing that the same thing it happened to mostly that we used to give least importance to the disposal of the dead animals. These things also we have to take care of during the disaster relief and the response also. So these are the things are major relief and relief and response activity during disaster. So after the disaster, so immediately and psychologically also we have to focus on the people. The disaster affected people mostly used to be in shock, they used to be in anger, they used to be in fear, they used to be in helplessness, they used to be in anxiety, they used to be in depressedness, they used to be and sadness also. So we have to be give a proper psychological support to the victims, and we and the government are listening to the situation person, and we have to give the offering empathy and understanding, enable them to not feel alone in terms of the reality. Okay, so none else than it is suitable for that task. They have to the family and the associate, and the family and the community organization and the local level people, they have to do these kind of activities to bring the resilience and of the people and bring the confidence of the people. So towards the end, disaster relief and response is that this activity used to start after the immediate disaster site also, and these are the activities used to be carried out by the mainly by the community after come forth by the
government, non-governmental organization, community-based organization, and vulnerability organization also. If you provide the immediate relief and response activity properly in an efficient manner, then it would be, it can carry forward the post-disaster situation in a very effective manner. So thanks a lot for listening. We will discuss in another topic in another session. Thanks a lot.